Hey everyone, welcome to this channel once again. In the last video, we understood कि how do we update our state variable by taking users input, which means हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस वैल्यू को हम स्टोर करते हैं और फिर उस वैल्यू से हम लोग हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हैं. ओके हम चाहें तो हम किसी स्टैटिक वैल्यू से भी हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं. पर इन द लास्ट वीडियो भी सॉ कि हम लोग किसी यूज़र के इनपुट को लेकर के हम स्टेट वेरिएबल को कैसे अपडेट करते हैं. सो इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो yet, you can go ahead and check it once again. Okay, now in this video we'll see कि sometimes हम लोग का set state जो function होता है, like for example over here we are having this num variable. num यहाँ पर एक state variable है, set num यहाँ पर एक set state function है for this num state variable. Okay, तो कभी कभी आपको ये feel होगा that your set num function is not working. Okay, so first of all I'll try to create a scenario जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि okay fine this function is not working. Why is it not working? Okay, so let's come. First of all, I'll create a new component. Inside this components folder only, I'll create another file. I'll give it name as part3.js. I'll do all the necessary stuff that is required to create a component. Import React from React, and then I'll create a function, export default, and then I'll give it name as part3, and then I'll create the function. Okay, over here I missed this function keyword. Inside this one, I will write down my return function, which will be responsible to return my JSX. I will write down over here inside this one. मैं यहाँ पर एक h1 tag create कर देती हूँ, जिसमें लिख देती हूँ hello world. Okay, like this. Save this file and then हम लोग सबसे पहले इसको app.js के अंदर render कर लेते हैं. So we will write down part3 like this. So let's import it also so that ये import statement यहाँ पे add हो जाए. अगर हम लोग इस तरह से import कर देते हैं, import statement यहाँ पे automatically add हो जाता है. Okay, let's save it. Let's go back to our browser first of all and then reload our page and see if the hello world is coming or not. Yes, it is coming. I don't want to see my test component right now. मैं इसको hide कर सकती हूँ. Application को run करने के लिए आपको you need to use the command npm start. Okay, अपना terminal open कर सकते हैं. From the top you'll get the option new terminal and then you can run the command npm start to start your application. Okay, so we are right now inside our file part3.js. Okay, now inside this file I'll basically create one state variable और फिर हम लोग चेक करेंगे कि ऐसे कौन से सिनेरियोज होते हैं जब हम लोग को ये फील होता है कि हम लोग का सेट स्टेट फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट ओवर हियर const and then I'll give my state variable name as a and then I'll write down function as setA. Okay, over here I'll give it value. मैं कुछ उसको random value देती हूँ, कोई initial value set कर देते हैं हम उसकी, like for example 10. हमने उसका initial value set किया है 10. Okay, now inside this one, after this h1 tag I'll create a button. Okay, button हम create करेंगे, इसके अंदर हम लोग title देंगे click to change state value. Okay, like this. Inside this one, the moment कोई someone इस बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे एक on click function भी handle करना है. Okay, so I'll start writing down a on click function. Okay, inside this one, handle change like this. I have created a function. I have called a function, basically implemented a function. Now I need to write down उसका definition. So function and then handle change like this. Okay, तो ये हमारा handle change function हो गया. Okay, very first thing that I want to do over here is that मैं यहाँ पे state का value I want to print, like what is the value coming for my state variable. Okay, and then I write down a over here. Okay, let's go to our browser over here. use state is not imported. Since हम लोग का ये एक name import होता है तो हम लोग यहाँ पर इसको brackets के अंदर import कर लेंगे like this. Okay, come back. Let's open our inspect element. Do function F12. You can open it. Then the moment once I will click on this button, ये हम लोग को basically console के अंदर display करेगा that if what is my state variable value. Okay, जैसे मैं इस पर click करूँगी तो कहता है क्योंकि final state variable value is 10. हम लोगों ने initial value भी वही set करी थी तो everything is going fine till this point. Okay, now I'll create one more and then I'll write down over here after the state value. Okay, and now between these two statements मैं यहाँ पर ये set a function को कॉल करना चाहती हूँ
and then I would like to modify the value of this a variable and I would like to make it 20. मतलब मैं यहाँ पर स्टेट वेरिएबल a का वैल्यू मॉडिफाई करके 20 करना चाहती हूँ एंड देन आई वांट टू सी कि वो a वेरिएबल का वैल्यू सेट हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, रीलोड योर पेज, क्लिक टू चेंज स्टेट वैल्यू. सो इट इज़ 10 बट हमने फंक्शन कॉल कर लिया, उसके बाद में भी ये वैल्यू 10 ही है. ओके, सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे यू विल फील लाइक योर सेट ए फंक्शन इज़ नॉट वर्किंग. ओके, सो यू शुड नॉट फील दैट कि आपका सेट स्टेट फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वर्किंग. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम गोइंग ऑन ओवर हियर इज दैट सेट स्टेट फंक्शन जो होता है वो एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है. विच मीन्स जब आपने फंक्शन को सबसे पहले कॉल किया, नॉट नेसेसरी कि उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में ही आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी. ओके, नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन उसी मोमेंट पर वो एग्जीक्यूट हो गया एंड वो आपको स्टेट वेरिएबल अपडेट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. ओके, सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. बट ऑन द अदर हैंड जब आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ में एट द सेम प्लेस ओनली अगर आप यहाँ पे ए वैल्यू को प्रिंट करो, ओके, एंड देन यू कैन रीलोड द पेज, सो यू कैन सी योर ए वेरिएबल वैल्यू इज कमिंग ओवर हियर. पर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू चेंज स्टेट वैल्यू, मतलब कि हम वो सेट स्टेट फंक्शन को वापस कॉल कर रहे हैं विच शुड बेसिकली अपडेट माई स्टेट वेरिएबल वैल्यू. तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई है, पर इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली आपको सेट स्टेट फंक्शन से अपडेटेड स्टेट वैल्यू कभी भी रिसीव नहीं होगी. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज आपका सेट स्टेट फंक्शन एक असिंक्रोनस फंक्शन होता है. इस वजह से वो आपको इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट ओनली इफ़ यू आर विलिंग कि वो मुझे आउटपुट देने लगे या फिर वो मुझे करेक्ट अपडेटेड स्टेट वैल्यू देने लगे. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. यू शुड नॉट एक्सपेक्ट डूइंग दिस. ओके, so you can simply update your state variable value and then you can start utilizing it. Okay, आपके DOM के ऊपर definitely you will start receiving the updated value. DOM आपका स्क्रीन होता है, DOM के ऊपर you will start receiving the updated value. हम ये सेम चीज़ एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ नॉर्मल वेरिएबल. नॉर्मल वेरिएबल मीन्स विच इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल. ओके, आई विल क्रिएट अनदर वेरिएबल, आई विल गिव इट वैल्यू एज 20. Over here I'll write down a equals to this and then I want to print b also like this. So I'll save it. So which means I'm getting both the values, a equals to 10 and then b equals to 20. यहाँ पे दोनों की दोनों values I'm able to get over here. अब मैं ये चाहती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर मैं set a करके 20 भी कर दूँ and then I would like to modify the value of b also and I would like to make it 30. Okay. Make it like this, click on this function and then you will be able to update your 20. But आपका normal variable का value update नहीं होगा. Why is that so? Because normal variable एक state variable नहीं है. इसलिए until unless you do not refresh your entire web page, आपका value update नहीं करके show करेगा. Okay? So your normal state variable value से आपका DOM screen update नहीं होता. इस वजह से वो value आपको updated show नहीं करता. That is why we do not prefer to create normal variables inside React. We prefer to create state variables. Okay, so that's it about this video. The most important thing is that set state function आपको instantly आपको updated value नहीं provide करेगा because it is a asynchronous function. Always remember, sometimes confusion appears a lot कि वो synchronous है या asynchronous है. It is a asynchronous function, which means वो line by line execute नहीं करता, वो synchronously execute नहीं करता, वो असिंक्रोनस फंक्शन है, विच मीन्स वो आपको इंस्टेंटली अपडेटेड वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी store our state variable inside by having a initial value or our default value as array or objects. अभी तक हम लोगों ने state variables वो देखे जहाँ पर हम लोगों ने static value provides की like 10, 20, string, boolean, true, false and all these. अब हम लोग array and objects चेक करेंगे. थैंक यू.